अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। आज हम cs302 के फाइनल टर्म MCQs जो पास्ट पेपर्स में आए उनका पार्ट बी करेंगे। यानी पिछले 2 साल के जो पेपर्स थे हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया, अब हम अगले 3 साल के या 4 जितने भी हो गए करेंगे। मेरे पास 10 साल के पेपर्स हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQs है 2012 के पेपर से। अब ऑनवर्ड हम आगे बढ़ रहे हैं। Consider an up and down counter that count between 0 and 15. If external input x is 0, the counter count upward 0, 0, 0 to 0 to 1, 1, 1 and 1. And if external input x is 1, the counter count downward. Now suppose that present state is 1, 1, 0, 0 and x is equal to 1. The next state of the counter will be 1, 1, 0, 1. In a state diagram, the transition from a current state, the next state is determined by current state and the input. Dash is used to minimize the possible number of state of state assignment. अच्छा, जितने भी पेपर्स में हम रिपीट देख रहे हैं, MCQ देख रहे हैं, वो काफ़ी रिपीट्स हैं। मतलब 2011 में जो थे वो 2012 में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सो काइंडली अच्छी से प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आपके पेपर अच्छे हों। Dash is used to simplify the circuit that determine the next state assignment. The basic state assignment tends to maximize the number of state variables that don't change in a group of related state. अच्छा, जो रिपीट हो रहा है वो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, आप देख लीजिएगा। रिपीट के आगे REP लिखा हुआ है। 5-bit Johnson counter sequence through dash state 10 states. अब ये देखें, ये वाला भी रिपीट है, तो उसे आप देख लीजिएगा। The address from which the data is read is provided by microprocessor. ये भी रिपीट है। FIFO first in first out. LUT वाला भी रिपीट है। Dash of a D/A convert is determined by comparing the actual output of D/A converter with the expected output accuracy. इस also रिपीट। और ये डायग्राम चेक कर लीजिएगा। इस डायग्राम को कहते हैं asynchronous up counter. The sequence of state that is implemented by n bits Johnson counter is 2n, n multiplied by 2. Next year, following standard POS expression देख लीजिएगा। Is it true or false? Is true. An alternate method of implementing comparators which allow comparators to easily cascade without the need of an extra logic gate is using attractive circuit-based comparators. The multiplexer is also called data distributor. The operator of JK flip-flop is similar to that of the SR flip-flop, except that the JK flip-flop doesn't have an invalid state. It also repeats. A flip-flop is connected to positive 5 volts and is draw 5 mA of a current during its operation. The power dissipation of the flip-flop is 25 MW. Dash counter, the name indicated, are not triggered simultaneously, asynchronous. In a state diagram, the transition from a current state, the next state is determined by current state and input. Asynchronous decay counter will have dash flip flop 4. याद रखिएगा, flip flop में हमारे पास ज़्यादातर वैल्यू 4 ही में आएगी. Dash is used to minimize the possible number of state of a circuit. State assignment. अच्छा, इसमें 3 रिपीट है, तो हम नेक्स्ट वाला करते हैं. The alternate solution for a demultiplexer register combination circuit is serial in parallel out shift register. याद रखिएगा, S in P out shift register है, यानी serial in parallel out shift register. ओके, ये देख लीजिएगा कि सारे रिपीट है, तो ये नहीं कर। ओके जी, इसमें सिर्फ ये एक न्यू MCQ है, बाकी रिपीट वाली नहीं करी ताकि टाइम और सेव हो जाए हमारा थोड़ा सा. The 4-bit 2s complement representation of +5 is 0, 1, 0, 1. अब हम न्यू पे आ गए. For a positive edge trigger JK flip-flop with both J and K high, the output will dash if the clock goes high toggle. The OR gate perform boolean addition. याद रखिएगा, और से हम boolean addition करते हैं. If an SR latch has 1 on the S input and 0 and a 0 on the R input, and then the S input goes to 0, the latch will be set. आगे है determine the value of A, B, C, D that make the sum
terms a bar plus b plus c bar plus d equal to 0. अच्छा इसका आंसर है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 0। अच्छा बार का मतलब होता है 1, तो हम जहाँ भी हमारे पास बार आएगा हम 1 कर देंगे। अब हम आगे द पावर dissipation PD of a logic gate is the product of the DC supply voltage and the peak current. A Kellogg map is similar to a truth table because it presents all the possible value of input variable and the resulting output of each value. Is it true or false? Is it true? NOR gate can perform the operation of AND or a NOT gate. It is also true. Using multiplexer as a parallel to serial converter requires dash connected to the multiplexer, a parallel to serial converter circuit. The three variable Karnaugh map K map has dash cells for minimum or maximum terms, that is 8. In designing any counter, the transition from the current state, the next state is determined by current state and input. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। Some term max term is implementing using dash gates or gates. Given the state diagram of up and down counter, we can find the next state of a given present state. When both the input of S trigger JK flip flop are the set to logic 0 dash, Q भी हमारे पास 1 होगा और Q 0 भी होगा। If S is equal to 1, R is equal to 0, then Q T plus 1 is equal to for positive S trigger flip flop. Q हमारे पास 0 होता है और जब उसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। If S is equal to 1, R is equal to 1, Q T प्लस 1 फॉर नेगेटिव। अच्छा सुनिए यहाँ पे पॉजिटिव एच था तो 1 हमारे पास 1 रहा था, हमने प्लस किया था। अब 0 में से माइनस तो नहीं कर सकते ना हम नेगेटिव एच के लिए, तो हमारे पास इनवैलिड आ जाएगा। The minimum time for which the input signal has to maintain at the input of flip-flop is called dash of the flip-flop. It also repeats, so its answer is hold time. The counter is implementing using 3 flip-flops. Possibly it will have dash maximum output state 8. 3 है हमारे पास 8 होंगे, ये भी रिपीट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा रिपीट्स हो रहे हैं, तो अच्छी तैयारी कीजिएगा। In dash out Q output of the last flip-flop of the shift register is connected to the data input of the first flip-flop of the shift register. Dash में आएगा ring counter. The dash of a ROM is the time it takes from the data to appear at the data output of a ROM chip after an address is applied to the address input lines. Access time. Bistable devices remain in either of their dash states unless the input forces the device to switch its state. इसका आंसर होगा 2. Dash occur ये repeat है. The alternate solution for multiplexer and register circuit is parallel in serial out shift register. ये वही वाला है, ये भी repeat है हमारे पास. A full adder has a Cn या sign कर दें is equal to 0. What are the sum of bracket greater than private type is equal to PICT picked, ALT is equal to sigma, and the carry count या C out when A is equal to 1, B is equal to 1. हमारे पास आएगा C is equal to 0 and Cn is equal to 0 or C out is equal to 1. The glitches due to race condition can be avoided by using a negative edge trigger flip-flop. The design and implementation of a synchronous counter start from state design. The state diagram. The OR counter is implemented using a single decade counter and a flip-flop. Guys, आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा repeats में आ रहे हैं. The high density flash memory cell is implemented using one floating gate MOS transistor. Question 2 है Q2 is equal to Q1 or X or Q3. The above able expression will have Q2 is equal to Q1 is not equal to your hashtag X hashtag Q3. Generally, the power dissipation of a dash device remains constant throughout their operation. TTL.
When the control line in tri-state buffer is high and buffer operate like dash gates, not gates.